ओके। हाय गाइस। तो आज मैं आई हूँ आप लोगों को ISC की हिस्ट्री की चैप्टर 10 दैट इज प्रोटेस्ट मूवमेंट। यहाँ पर तीन पार्ट्स है, सिविल राइट, एंटी अपार्थाइड एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो आज मैं आप लोगों को सिविल राइट मूवमेंट के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी करके वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो मुझे क्या मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे क्या एक ऐसा लाइक मुझे एक एनर्जी करेज मिलेगा नेक्स्ट वीडियो करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए कमेंट भी करना अगर मेरी पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आ रही है। So, this is racial problems and civil rights in USA, racial discrimination and change in the government's attitude, campaign for equal rights, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। यहाँ पर डॉक्टर मार्टिन लूथर का किंग बहुत इम्पोर्टेंट है और ISC में आने का बहुत स्कोप है। So, after the Second World War, the United States of America emerged as a great power in world politics. So, we know that Second World War के बाद USA एक बहुत बड़ा पावर emerged हुआ था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। In spite of general affluence, there was a large number of problems in American society. तो इतना बड़ा मतलब इतना अच्छा ग्रेट पावर है, उसके बाद भी वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम था अमेरिका में। And one of the important issue was the racial problem in the country. तो सबसे ज़्यादा one of the important जो issue था वो था racial problem which was in the country. Slavery was abolished in America in 1863. So slavery abolished कर दिया था 1863 में। The black people residing, slavery मतलब वो नौकर होते हैं ना, वो नौकर को slavery कहते हैं। Then the black people residing in America for a long time expected that they would entitled to enjoy the same rights as the white enjoy, like the right to own a land, to receive a good education and to vote. So जो ब्लैक पीपल रहते थे अमेरिका में, वो लोग एक्सपेक्ट किए थे कि वो लोग भी वो लोग भी वाइट की तरह लॉन्ग राइट एंजॉय करेंगे, ठीक है। वाइट की तरह राइट एंजॉय करेंगे, लाइक राइट टू ओन अ लैंड, रिसीव गुड एजुकेशन, टू वोट, ये सब राइट एंजॉय करेंगे। इन द साउथ पार्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो हम पढ़ेंगे पहले उसके बाद। इन द साउदर्न स्टेट्स स्लेवरी एग्जिस्टेड फॉर ओवर 200 years. तो साउदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 200 years तक स्लेवरी था। The white people residing in the southern states always took the black people as a slave and inferiors. So white people जो southern states में थे वो हमेशा black people को as a slaves मानते थे, एंड एज इंफीरियर मानते थे, ठीक है। स्लेव्स और इंफीरियर की तरह ट्रीट करते थे। नेचुरली दिस पीपल फेल्ड इट डिफिकल्ट टू ट्रीट देम एज इक्वल्स। सो द साउदर्न स्टेट्स को क्या दिक्कत था ब्लैक पीपल को इक्वल, उनके वाइट पीपल ब्लैक पीपल इक्वल हो गए, ये इनको मानने में दिक्कत थी। द ब्लैक पीपल्स फेल दैट दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑल रिस्पेक्ट्स। सो ब्लैक पीपल को लगा कि हम बहुत चीज़ों से हम क्या डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हेन यू आर लाइक डिफरेंस करना, एक दूसरे के साथ डिफरेंस करना, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। So, how the black people were discriminated? They were prevented from voting. So they were not given the opportunity or the right to vote. Only the white people were given the right to vote. Okay. Then they were forced to attend separate schools. So जो schools था वो separate था, poor quality था of education, then enjoyed by the whites. Whites used to go to a good school, but the blacks were forced to go for a poor quality of education, and also in separate schools. Okay, separate schools where the education is poor. They were segregated in places like restaurants. Sorry, in so they were segregated means they were different. They were differentiated. Like कुछ प्लेसेस वाइट्स के लिए, अच्छे प्लेसेस वाइट्स के लिए बुक थे, एंड कुछ प्लेसेस जो अच्छा नहीं था वो ब्लैक्स के लिए रिजर्व थे। सो लाइक दिस दे वर segregated means differentiated in restaurants and public restaurants, on buses and trains.
and they had to do the most unpleasant and ill-paid jobs like sweepers. ऐसा होता है ना, वैसा job करना पड़ता था blacks को. Not only that, most of the trade unions, which meant to protect the interest of the workers, refused to allow black people to join as a member. So trade unions जो होता है जहाँ पर protect interest को protect किया जाता है, workers का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था. तो वहाँ पर क्या किया कि ब्लैक पीपल का जो इंटरेस्ट था उसको मना कर दिया गया कि हम तुम्हारे इंटरेस्ट तुम जो बाहर में जाओ, हमें तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारे कोई चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो. द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू कैंपेन फॉर ब्लैक पीपल right began in 1910, and the formation of the National Association for the Advancement of Colored People, NAACP. This is very important. इसका full form याद रखना, National Association for the Advancement of Colored People. But this organization failed to make any headway. But this was a fail. It failed. Okay, and the black people were still treated as the second-class citizens during the Second World War. तो Second World War के समय फिर भी वो inferior slaves की तरह ट्रीट किया था. अच्छा, ट्रीट नहीं किया था. Remember the full form. Okay. Then there was a change of attitude. There was a change of attitude. In 1946, President Truman appointed a committee to investigate civil rights. So President Truman ने क्या किया, कॉमिटी को अपॉइंट किया था टू इन्वेस्टिगेट द सिविल राइट्स. सो सिविल राइट्स में क्या क्या प्रॉब्लम था वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रूमन 1946 में एक कॉमिटी को अपॉइंट किया था. The committee recommended that the Congress should pass law to stop racial discrimination in jobs and to allow the blacks the right to vote. So कांग्रेस था तो जो कमिटी जो था उसने रिकमेंड किया था कांग्रेस को कि जो लॉज है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने के, ऐसा लॉ निकालिए जिससे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या बंद हो जाए अमेरिका में, और क्या ब्लैक को अलाउ कर दीजिए वोट करने के लिए. The committee itself gave several reasons for the recommendations. तो कमिटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन क्यों करना चाहिए. Some politicians felt that it was not morally right to treat the black in this way. तो बहुत politicians मतलब feel किया कि ऐसा black को treat नहीं करना चाहिए. Then second, it was a waste of talent to exclude the black from top jobs. Look like top jobs like we can a term of colleges called brain drain. So अभी तो skills होता है ना, तो क्या होता है कि जो black talented people है वो काम नहीं कर पाते टॉप जॉब्स. तो इकोनॉमी में भी एक प्रॉब्लम आता होगा, तो इसलिए बोला गया. Then the black gradually became outspoken in their demands of civil rights. So black को जो civil rights था वो एकदम ही गायब कर दिया था, कोई civil rights नहीं दिया था उन लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने. उसके बाद क्या, America would claim that country is really a democratic country, could not claim that the country is still democratic country as 10% of the population was denied the voting right. So as the voting right was not given to blacks, so the country cannot be called as a democratic country. So America cannot call itself as a democratic country until the 10% of the population, that is the black, are given the right to vote. Nationalism had gradually developed. So you know now what is nationalism? That nationalism is a love for one's country. So where it was developed in Asia and Africa. The non-white people of India and Indonesia were on the verge of getting independence. So in Asia और independence में तब nationalism बहुत developed हुआ था, like Asia and Africa में, and India and Indonesia were on the verge of getting independence. So उनको को क्या Indian people and Indonesian people को independence चाहिए था. The new states might turn against America and move
towards communism. So so क्या हुआ, the new states might turn against अमेरिका. ये डर लगा था कि ये कमेटी को डर लगा था कि जो नए स्टेट्स लाइक इंडिया एंड इंडोनेशिया अगर हमारे अमेरिका में अगर मतलब टर्न अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट पे चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा. एंड मूव टूवर्ड्स कम्युनिज्म, क्योंकि वो कोल्ड वॉर के पीरियड में था. ठीक है, तो अगर ये इंडिया एंड इंडोनेशिया अगर अमेरिका से गुस्सा हो जाए तो क्या कम्युनिस्ट में चला जाएगा, मतलब रशिया ये सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिला देगा. तो ये करना नहीं चाहिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बंद कर दो. इस अमेरिकन वाइट्स कंटिन्यू दिस अनफेयर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द ब्लैक पीपल. As a result, within the next few years, the government and the Supreme Court declared new laws to introduce racial equality in the country. So, कुछ सालों के बाद गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किया रेशियल इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए कंट्री में. सेपरेट स्कूल्स फॉर ब्लैक एंड वाइट्स वर डिक्लेयर इलीगल. सो जो सेपरेट स्कूल्स था, पोर क्वालिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सेपरेट स्कूल ये जो था ये क्या किया गया था, इलीगल कर दिया था. एंड सम ब्लैक पीपल हैड टू इंक्लूड ऑन ऑल जूरीज. ओके, सो जो ब्लैक का स्कूल्स था और वाइट का स्कूल्स था का सेपरेशन हुआ तो उसको इलीगल कह दिया था. एंड ऑल्सो ब्लैक पीपल एक्सक्लूडेड ऑन ऑल जूरीज. ब्लैक पीपल को इंक्लूड करते, जूरीज मतलब जहाँ पर जज लाइक वैसा होता है उसको जूरीज बोलते हैं. स्कूल शुड बी डिससेग्रीगेटेड. सो स्कूल्स में कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा, सब एक साथ पढ़ेंगे. इट मीन ब्लैक चिल्ड्रन हैड टू अटेंड वाइट स्कूल्स एंड वाइस वर्सा. ऑल्सो वाइट स्कूल्स, white children also had to attend black schools. Then it was 1957, the Civil Rights Act. The act upon commission to investigate the denial of voting rights to the black people. So in 1957 में Civil Rights Act was set up a commission to investigate the denial of voting. 1957 में Civil Rights Act ने ऐसा एक commission set up किया to investigate why the voting rights were denied to the black people. Investigate करने के लिए. Okay, to investigate why the voting rights were denied. In 1960, Racial Rights Act had provision for the black to register as voters. So 1960 में Civil Rights Act ने क्या किया, black को बोले तुम आओ और register करो voters के लिए. But it was not really effective. क्यों effective? Moreover, the blacks were afraid of registering themselves as voters for fear of being harassed by the whites. So they were afraid, blacks were afraid that अगर मैं रजिस्टर करूँ खुद को वोटर्स के लिए तब शायद ऐसा होगा कि वाइट मुझे हैरासमेंट करेगा या फिर पब्लिकली हैरास करेगा, तो कौन अपना खुद जज के इंसल्ट करना चाहता है. But unfortunately, the laws were not always carried out. Some of the southern states refused to implement the school desegregated order. So पहले से ही साउदर्न स्टेट्स में बहुत प्रॉब्लम था ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में, और उसके बाद भी चला. अल्टीमेटली प्रेसिडेंट आइजनहोवर sent federal troops to escort the black children into high schools at Little Rock, Arkansas, where the governor had defied the order of the Supreme Court. So प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने क्या किया, फेडरल ट्रूप्स भेजा या ब्लैक चिल्ड्रंस को हाई स्कूल में जाने को देने के लिए. एंड कहाँ पर, लिटिल रॉक आर्कानसास स्कूल में, आर्कानसास में, वेयर द गवर्नर, जहाँ पर गवर्नर ने क्या था, डिनाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को. दिस वॉज अ सिम्बॉलिक विक्ट्री, ये सिम्बॉलिक विक्ट्री था. बट द साउदर्न वाइट्स कंटिन्यू टू डिफाई द लॉ. By 1961, only 25% of schools and colleges in the South were desegregated. So, only 25% schools और colleges desegregated हुआ. बाकी मतलब 75% अभी स्कूल था जहाँ पर blacks को अलाउ नहीं किया जाता था. Then it was campaign for equal rights. So it was campaign for equal rights. So what was that? A huge, in mid 1950s, a mass civil rights movement
developed in America for a number of reasons. So mid 50s में क्या हुआ, अमेरिका में बहुत सारे सिविल राइट मूवमेंट डेवलप हुआ था फॉर अ नंबर ऑफ रीजन. क्या था रीजन से वो हम पढ़ेंगे अब. A huge number of black people lived in the northern industrial cities. There was a huge number of black people who lived in the northern industrial cities. They became aware of the political issue. तो उन जो नॉर्दर्न सिटीज इंडस्ट्रियल सिटीज में रहते थे उन लोग पता चल गया था कि क्या हो रहा था पॉलिटिकल इश्यूज में. इन द पॉलिटिकल मतलब ब्लैक कैसा ब्लैक को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, वो उन लोगों को वो समझ में आ गया था कि वोट नहीं करने दे रहे, ये कौन करने दे रहे. तो उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया था कि ब्लैक्स को कैसे डिसएग्रीगेटेड या फिर स्कूल्स में सेग्रीगेटेड किया जा रहा था, वो समझ में आ गया था. इन द मीन टाइम अ ब्लैक मिडिल क्लास हैड इमर्ज्ड इन अमेरिका. सो मिडिल क्लास अमेरिका में एक मिडिल क्लास ब्लैक मिडिल क्लास इमर्ज किया था अमेरिका में. दे प्रोड्यूस नंबर ऑफ टैलेंटेड लीडर्स. वहाँ पर टैलेंटेड ऑफ लीडर्स आए थे. कहाँ पर? वो ब्लैक मिडिल क्लास पीपल से बहुत टैलेंटेड लीडर्स आए थे. इन एशिया In Asia and Africa, states like India and Ghana became independent. तो एशिया और अफ्रीका से इंडिया और घाना क्या इंडिपेंडेंट हो गए थे. Inspired by this development, the Black American protested against the unfair treatment of the white people. तो इंडिया और घाना में जब इंडिपेंडेंट हो गया था तो यहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे ब्लैक पीपल बाय दिस डेवलपमेंट. कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंस कमाया है. द ब्लैक अमेरिकन्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे वो अनफेयर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट द वाइट पीपल. द ट्रूमन कमिटी had raised the hopes of the black people. ट्रूमन कमिटी जो कमिटी को वहाँ पर चेंज एटीट्यूड में ये प्रेसिडेंट ट्रूमन जो अपॉइंट किया था कमिटी टू इन्वेस्टिगेट सिविल राइट्स. सो वहाँ पर क्या था, ट्रूमन कमिटी ने होप्स रेज कर दिया था ब्लैक पीपल को. बट दे बिकेम इम्पेशेंट. बट स्लो फेस धीरे धीरे चल रहा था. वो लोग इम्पेशेंट हो गए थे. एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस इन द सोसाइटी. तो इतना धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आ रहा था कि वो लोग इम्पेशेंट हो गए थे. And the small advances they made created strong hostility among the southern whites. So ये जो changes advances था वो एक strong hostility create कर दिया था southern whites में. Some southern states government even banned the NAACP का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था ब्लैक के लिए. It was now felt that a national mass movement should be started to change the situation. So southern state ने NCP को बैन कर दिया था बहुत southern states में. So इन ब्लैक को लगा कि नहीं, अब हमें एक mass movement शुरू करना पड़ेगा. A national campaign started in 1955 with the emergence of Dr. Martin Luther King. So Dr. Martin Luther King is a very important, character नहीं, एक person for your ISC is very important. So national campaign किसने स्टार्ट किया था 1955 में? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग. वो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे. An outstanding leader of non-violent civil rights movement. He was an outstanding leader of non-violent. गांधी जी की तरह non-violent, कोई violence नहीं चाहते थे. After a black lady, Rosa Parks, had been arrested for sitting in a seat reserved for the white on a bus in Montgomery. So एक white black lady थी जो जिसका नाम था रोजा पार्क. उसने क्या किया था, उसको अरेस्ट किया गया था जो कि उसने एक सीट में बैठा था जो वाइट्स के लिए रिजर्व किया गया था इन मॉन्टगोमेरी अलाबामा. डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ऑर्गेनाइज्ड अ बॉयकॉट ऑफ all Montgomery buses.
सो यहाँ पर सर डॉक्टर मार्टिन लूथर की क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक बॉयकॉट टू ऑल मॉन्टगोमरी बसेस. Martin Luther King insisted that the movement should be peaceful. What Martin Luther King said that the movement should be peaceful. This campaign was successful. And segregated seating arrangement were stopped on Montgomery buses. And जो segregation the whites and black एक साथ नहीं रह सकते वो stopped हो गया था Montgomery buses में. This was the beginning of this campaign to sit in an peaceful disobedience. So ये इसका पहला beginning था और बहुत कुछ किया Montgomery ने. तो देखते क्या था. This was the beginning of his campaign. This movement reached its climax in 1963 और ये movement हुआ था 1955 में. और 1963 में क्या हुआ, 11 साल बाद 1963 when a massive rally in Washington for jobs and freedom was attended by 250,000 people. So Washington में एक रैली किया गया था, मैसिव रैली जो किया था, जो किसके लिए था, जॉब्स के लिए और फ्रीडम के लिए. For jobs and freedom was attended by 250,000 people. There was a number of civil rights activists present. They are known as Big Six. Big Six का नाम जरूर याद रखना. Philip Randolph, Roy Wilkins, Martin Luther King, Whitney Young, James Farmer and John Lewis. ये Big Six थे जो यहाँ इस massive rally में part थे. Although these leaders came from different political horizons, they were intent on peacefulness on the of the march. तो ये बहुत different political horizons से आया था, पर फिर भी उन लोगों ने peacefully march को complete किया. They were own marshals to ensure that the event would be peaceful and respectful of the law. So they were own marshals, like सब कुछ ठीक से हो या शांति से हो, वो देख रहे थे खुद ही. Martin Luther King delivered a speech in which he talked about his dream of a future. This is very important. America in which dream of future America in which everybody would be equal. This is very important. Wait, let me rub this. This is very important and उस speech का नाम था I Have a Dream. Part of the speech of Martin Luther King ultimately turned out to a national text. Another, तो ये मार्टिन लूथर किंग जो मैसिव रैली था वहाँ पर उसने एक स्पीच डिलीवर किया था जिसके जो which was that which he talked about his dream of a future America. तो उसका क्या ड्रीम था फ्यूचर अमेरिका के लिए, उस बारे में उन्होंने बात किया था. और जो उसका ड्रीम था कि everybody in America would be equal. And the starting was I have a dream, and this was a national, turned out as a national text. Another important feature was a lot of feminine civil right movements. So feminist movement आएगा जो इसके बाद anti-birth right, उसके बाद feminist movement groups had participated in the organization of the march. In the features था कि feminist civil right movement civil groups भी यहाँ पर participate किए थे. This march can be remembered for I Have a Dream speech, but for most of the female activists, के लिए क्या था? It was a mean awakening for forcing black women not only to fight for civil rights but also to engage the feminist movement. Feminist movement आएगा, तो जो female activists थे उन लोगों को encourage किया था कि चलो सिर्फ black women के नहीं, female के लिए भी हम लड़ते हैं. In 1963, Martin Luther King was awarded the Nobel Prizes for Peace, but tragically, in 1968, he was assassinated by Memphis, Tennessee. I think I mispronounced the name of the place, but you can read it. So Martin Luther King ने Nobel Prize जीता था, but उनको assassinate किया था Memphis में. You can see this picture पर मेरे यहाँ पर क्रॉप आ गया था. ये जॉन केनेडी है क्या, यहाँ इसका बहुत करेक्ट पार्ट है. Progress was very slow and some blacks broke away from non-violent movement, thus formed a number of militant organizations.
So progress was still very slow. Some blacks broke away from non-violent movement. So as Martin Luther said, to do a non-violent movement, but the blacks were so impatient that they broke out the rule of non-violent and formed a number of military groups organization formed कर दिया. There were Democratic President Kennedy and Johnson were sympathetic towards the demands of the black people. ये वो वाला जॉनसन बेबी नहीं है, ये दूसरा जॉनसन बेबी है. It was President Kennedy and Johnson were sympathetic toward the demand of the black people. They were sympathetic. जो black people demand कर रहे थे वो उसके लिए वो sympathetic थे. And Kennedy appointed a first black ambassador of the US. So President Kennedy, he is President Kennedy. He was appointed as the first black ambassador of the USA. He also presented a civil rights bill to the Congress. So he also civil rights bill मतलब एक petition जैसे दिया था कांग्रेस को. This bill was passed in 1964 after a debate lasting 736 hours. This was a landmark piece of civil rights legislation in the United States. So उन्होंने जो बिल दिया था वो 1964 में पास हुआ था after a debate of 736 hours, not continuously but total करके 736 hours में. This is a landmark piece of civil rights legislation in the United States. It was बहुत बड़ा achievement था. This civil guaranteed the vote for the blacks, made racial discrimination in public illegal, facilities such as hotels, restaurants, and stores and in jobs illegal. So racial discrimination public places में hotels, restaurants, and jobs and stores में illegal कर दिया था और votes for black of votes कर सकते थे. However, the Civil Rights Act of 1964 did not include a number of protection against number of provision remained essential by civil rights readers. So इस civil rights bill में फिर भी कुछ खामती थे क्या कि पुलिस ब्रूटलिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पुलिस ब्रूटलिटी, पुलिस आके मारते थे. Then ending discrimination in private employment or guaranteeing the Justice Department power to initiate segregation of job or job discrimination lawsuits. Yes, sir. Again, this was not always carried out, especially in South and where black people were still afraid to vote. Southern में बहुत problem हुआ था. Johnson, not baby, Johnson introduced the Voting Right Act of 1965 and tried to make sure that the black could exercise their right to vote. So Johnson introduced Voting Right Act of 1965 and tried to make sure that the black could exercise their right to vote. He followed it up another Civil Rights Act in 1968. This act made it illegal to discriminate in selling properties or letting accommodation. So पहला सिविल राइट एक्ट निकाला जहाँ पर वोटिंग राइट दिया गया था ब्लैक पीपल को. फिर से सिविल राइट निकाला जहाँ पर इलीगल कर दिया गया. कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ सेलिंग प्रॉपर्टीज और लेटिंग अकोमोडेशन में, उसको इलीगल कर दिया. अगेन there was bitter white hostility to this reform. The problems of the administration was how to make sure that the acts were carried out. So the actual problem ये सब fail हो रहा था. So this was civil rights bill एक के बाद एक बार fail हो रहा था. क्यों हो रहा था कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे acts को carry out करें, ठीक है, कैसे black people को encourage करें कि हाँ तुम आओ वोट दो. During 1970s, much progress was made in voting. 1970 तक एक प्रोग्रेस आया था वोटिंग में. And by 1975, a large number of black people were elected to the Congress and made government bodies. So 1975 तक black people जो डर था वो चला गया था और कांग्रेस में they were elected and other government bodies में elected हो गए थे black people. So if you like the video, next बार मैं बहुत जल्दी लाऊंगी. अगर आपको समझ में आए तभी लाऊंगी, अगर समझ में आए तभी लाऊंगी, ठीक है ना. तो अगर आपको समझ में आए तो कमेंट कर देना कि यू अंडरस्टूड.
एंड अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना। चैप्टर 10 में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू।